वेलकम एचएसएस फैमिली, ऑल रिस्पेक्टेड डॉक्टर्स। जैसे कि आप सभी जानते हैं, डॉक्टर स्मिता मैम का केस है। इज वन ऑफ द बेस्ट मेंटर फॉर बेसिक एज वेल एज एडवांस कोर्स। वेलकम मैम। Thank you so much. Thank you, Sensor. Welcome all to this session of HSH. आज सुबह से हम लोग एक केस कर रहे हैं. थोड़ा सा ऑब्वियस केस भी है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ही भी है. बहुत सारे लोगों ने करेक्ट एनालिसिस दिया है. अंडरस्टैंडिंग तो सभी की बहुत अच्छी है. यस. एंड मेरा एक्सपेक्टेशन बेसिक कोर्स के स्टूडेंट्स का ज्यादा था बिकॉज वी हैव बीन टीचिंग देम फॉर द लास्ट 6 months. सो मोस्ट ऑफ देम हैव कम टू करेक्ट एनालिसिस, लेकिन बहुत लोगों ने लोची भी किया है. सो लेट मी रीड दिस केस फॉर यू. ओके वंस. Yes. So this girl, she comes to me. She is in the 7th standard. तो ये लड़की रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन 7th स्टैंडर्ड की गर्ल है. शी स्टेइंग विथ हर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड वन यंगर ब्रदर इन द 1st स्टैंडर्ड. मतलब मेरे पास जब भी वो लड़की आती है ना, तो ऐसे बैठी रहती है. मतलब कुछ जैसे इंटरेस्ट ही नहीं है, उसका केस नहीं है, वो जस्ट आई है ऐसे, एंड शी विल ऑलवेज गो एंड सिट ऑन द एग्जामिनेशन टेबल. तो वो मुझे डायरेक्टली फेस नहीं करेगी, ऐसे फेस करेगी. एंड मुझसे बात करने की उसको इतनी इंटरेस्ट नहीं रहती है. एंड शी विल आंसर टू द पॉइंट. मैं जो क्वेश्चन पूछती हूँ वो बराबर आंसर करती है. So I ask her that what is her main concern when she is sick. So she says मैं खाना नहीं खा पाती हूँ, मुझे हमेशा मैगी, बर्गर, मोमोज, सॉफ्ट ड्रिंक्स, जंक फूड, आई लाइक ओनली दैट ऐसे. और बीमार है तो हम लोग भी बोलते हैं और पेरेंट्स भी बोलते हैं खिचड़ी खाओ या राइस कांजी खाओ. तो ये सब उसको नहीं चाहिए रहता है. So that was her concern about eating. Then during sickness she doesn't have appetite, she doesn't want to eat. शायद because वो अच्छा खाना नहीं मिल रहा है उसकी वजह से भी होगा, या तो टेस्ट नहीं होगा. So she said bitter taste है, मैंने मुझे नहीं खाना है. और मैं कुछ भी क्वेश्चन पूछती हूँ ना, तो she's like giggling kind of. So I don't know, maybe उसको फनी लगता है because when she goes to the allopathic doctor they just check her and give her ना. तो I ask her what you feel and all that. एंड शी सेज मराठी में, शी सेज मला खूप राग येतो. मतलब मैं बहुत गुस्सा होती हूँ मैं जब मैं सिक होती हूँ, क्योंकि मम्मा स्कूल नहीं भेजती और मुझे तो स्कूल जाना रहता है. स्कूल इज सो मच फन. आई सेड स्कूल क्या है, स्कूल इज सो मच फन. एंड मेरे को घर में बैठना नहीं अच्छा लगता, मुझे बाहर स्कूल में बहुत अच्छा लगता है. दिस इज हर से. फिर then as usual, we just don't ask the बच्चा, we ask the parents also. Then I ask the mom. बिकॉज बहुत बार क्या होता है ना, अगर हम सिर्फ बच्चे पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, जैसे हम पीपीपी बोलते हैं, तो वी कैन बी मिसलेड ऑल्सो. Because sometimes what happens if they don't have a proper rapport, if they don't, so they will present a different picture at home, and sometimes in the clinic they will present a different picture. सो मम्मी सेड बहुत लेजी है, अक्खा दिन उसको मोबाइल लेके बैठना है, मतलब कुछ करना ही नहीं होता है वो, नॉट जस्ट बीमारी बट अदरवाइज ऑल्सो. एंड शी कीप्स ऑन टीजिंग द यंगर ब्रदर. जानबूझ के वो कीड़ा करते हैं ना, मतलब टपली मारेगी, वो देख रहा रहेगा कार्टून, तो फिर वो चैनल चेंज करेगी जस्ट फॉर पता नहीं, जब वो रोएगा या चिल्लाएगा तो उसको मजा आता होगा. और मम्मी बोलती है कि मम्मी इज अ टीचर, सो मम्मी डजंट वांट हर टू सी मोबाइल. तो मम्मी बोलती है या तो स्टोरी बुक पढ़, तो शी डजंट वांट टू रीड स्टोरी बुक, शी डजंट वांट टू स्टडी. वो सिर्फ मूवीज, गेम्स, मोबाइल पे. दैट टाइम हर आईज आर लिट कि मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है. एंड शी सेड वो छोटा बच्चा है ना, वो मोबाइल मत ले लो बोलेंगे तो सुनता है. तो दैट इज व्हाई पेरेंट्स ऑलवेज से वो कैसे सुनता है, तुम सुनती नहीं हो. तो उसको बहुत गुस्सा आता है और रोने लग जाती है. She likes when they are appreciating, when they are saying very good girl and all that. Now, then I asked how is she in school. So school में she takes part in athletics. She's good in running, and she's that built also is thin and athletic built, but not very good in studies because
she looks intelligent but maybe she's not interested, especially languages. हमारे इधर मराठी होती है ना, तो हिंदी and मराठी very boring, she said. English is okay because they are Catholics, so she speaks in English also. She's bold and bindas, but clinic में जो पूछा है वो ही बोलेगी. सो उसका जो वो स्कूल जाना है, लाइट रहना है, मजे में रहना है, ऑल दैट वाज पॉइंटिंग टुवर्ड्स बेलाडोना फॉर मी इन द फर्स्ट केस टेकिंग, यू नो. So I gave her belladonna, I gave her 30, I gave her 200, I tried, but then she would come every month, you know. And then second remedy I gave was tuberculinum, because one is again and again falling sick, second libertinism, she is like मुझे कुछ बोलो मत, मैं जो करती हूँ वो करने दो, amusement desires. So these were few remedies coming in my mind. Then one day she had come and I was thinking, why is she falling sick so often, like, you know. So I asked her ki tell me about your friends. Just I had never asked her. I had asked about teachers, I had asked about school, but I didn't ask her about friends, you know. Sometimes we miss. So her eyes were like full of tears, you know. Then I said, kya ho gaya? Then she said, I have no friends in school, nobody is my school friend, they don't take me to play only. And she looked sad. Normally she's that giggling and chirpy, na. And then her mother also said she's like this only, हमेशा कुछ ना कुछ होते रहता है उसके फ्रेंड के साथ और रोती रहती है, like, you know. So then I was just thinking this chirpy bubbly girl है, and then, you know, school में क्या होता होगा, why she doesn't have friends, you know. You don't know what is happening. So after I took this, most of you have come to that delusion, friendless she is, like, you know. That rubric clicked me there, because clearly she said माझा कोणी friend नहीं है, nobody takes me to play, you know, all that. So, and that was really affecting her, because that's the first time I saw some emotions in this girl. So that's how I took that rubric, okay. And then I correlated with the other things which I had taken. So now let us see the analysis. Anybody like full day you have given analysis, still after I have told this, anybody wants to give their analysis? Hello after correlating, because I've told you this rubric, friendless, I told you about my belladonna and tuberculinum failing. So anybody wants to give one final verdict? Anybody from my basic primary course, I would love to hear you. मैम लैकेसिस लगी मुझे तो ये. ओके, थोड़ा एनालिसिस बोल दीजिए. मैम अम्यूजमेंट डिजायर में है कि पढ़ना लिखना पसंद नहीं है, गेम खेलना ही पसंद है, या फिर फन लविंग है, टीवी वॉच करना, ये सब है, स्टडी नहीं पसंद है इतना. एंड मैम डिल्यूजन फ्रेंडलेस ही लिया हमने रूब्रिक. बट लेकेसिस क्लिनिक में आके शांत बैठेगा या बैठेगी? Is there any rubric to support this particular aspect? Because we've always seen, you know, lecasis यहाँ वहाँ भागते रहेगा, playful रहेगा and all that ना in the clinic. Any rubric which will tell why she's, you know, like that, if it is lecasis? And why she doesn't have friends? Somebody had asked in the group also that इतनी bubbly और cheerful लड़की है तो friendless क्यों होनी चाहिए? मैम मे बी वो अपनी इम्पोर्टेंस चाहती हो और बाकी फ्रेंड्स उसको ना देते हो. Okay. जैसे पल्स Could होती be. है, पल्सेटिला होती है, वो उसको आप कितना भी प्यार दो वो एब्जॉर्ब करती रहती है, और चाहिए. मे बी घर वाले Okay. उसे दे रहे हूँ मगर फ्रेंड्स ना दे रहे हूँ. Could be, और yes, could डोमिनेटिंग भी be. हो सकती है. बोथ फैक्टर्स. तो ये हो सकती है पे हम लोग रूब्रिक प्रिस्क्राइब कर सकते हैं क्या? We should have some data, no, कि वो dominating ही है, या we should have कि, you know, something which will tell us about her behavior in school. We can assume things, definitely reading between the lines, but there should be some ठोस points. Either the parents have told us or she has told us, which we can correlate. Dictate करती होगी. जान के छेड़ती है अपने, उसमें था कि जान के छेड़ती है अपने भाई को, Yes, जान के yes, डिस्टर्ब करती है, yes. उससे थोड़ा सा लगा.
Yes, could be. So, correctly. I also thought the same way. ये friendless मतलब शायद घर में जैसा कीड़ा कांडी करती है उसके भाई के साथ, शायद स्कूल में भी ऐसे करती होगी. And which friends will agree to this kind of behavior, na? So after some time they will say that you don't be our friend, especially 7th standard and all, na? We have that rubric, na? Jesting, making fun of everybody. है ना? Jesting fun of everybody. Today I'm going to talk a lot about rubrics. So please you all can note down also. Lot of good rubrics I will tell you, and I will speak only about children. So my analysis was that girl is timid in front of me. That is for sure. क्योंकि वो कभी भी ऐसे एकदम open होके नहीं बोली है. लेकिन the mother has said that she is मस्तीखोर at home. So we should consider that. We cannot take just timid. We have to take that she is mischievous. Mischievous है ना ये सब. चैनल चेंज करना, टपली मारना, ऑल दैट इज मिस्चीवियस. भाई को छेड़ना, फिर फन करना, हंसना, और ऑल दैट, जस्ट फॉर फन. क्या मजा आता होगा उसको. इट इज नॉट अ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर और इट इज नॉट अ मेलिशियस उतना सीवियर नहीं लेने की जरूरत है. इट्स जस्ट फॉर फन. सो इंटेंशन इज टू एंजॉय. So jesting is a very good rubric. You all should know this rubric, jesting. Jesting is making fun of somebody. Okay? Mocking is sarcastic way, you talk. This is not in this girl mocking, it is jesting. But mocking is also, I had a patient. अगर मेरे पास कोई पेशेंट नहीं होगा, जब वो एंटर होगा तो वो बोलेगा, क्या डॉक्टर कोई पेशेंट नहीं है, खाली बैठे हो, आज कुछ नहीं गले में. This is like mocking. So some people have that habit. So you should understand jesting, you should understand mocking, like we understand playful. Second thing which she said was घूमना, मस्ती, धमाल, that is her motto. उसमें TV आ गया, games आ गया, amusement desire for. All of you got this. All of you, 100% amusement desire for. Because मस्ती, पढ़ने बोलो या फिर स्टोरी बुक पढ़ने बोलो या मम्मी ने कुछ बोला तो that she doesn't want to. Look at this girl, how she's doing. She's like धमाल मस्ती, बाकी सब कुछ नहीं सुनना है. And she's not serious about studies. It's not that she's dull, but she's not serious about her work. So I took frivolous. This I had taken even when I gave her belladonna, all these things. Lekin timidity in front of the doctor is also seen here. So timidity, public appearing to, ये भी important rubric है इधर. Talking to in public. Okay. So I said she wants to go to school for fun. स्कूल में भी क्यों जाना है, यहाँ पे मम्मी खिचखिच करती रहती है, स्कूल में मजा आता है, सब लोग हैं. तो she said मस्ती के लिए, ना. And mom has many complaints against her, not studying, mobile, lazy. So we have few rubrics like time fritters away, wasting the time, na? Time fritters away. Aversion to study, concentration difficult, reading, studying for. These are few rubrics. जब बच्चे आते हैं ना, you must know these rubrics because these are children's rubric. Concentration difficult, reading, aversion to study. And I thought that she doesn't like that they are appreciating the brother and saying, "Oh, देखो कैसे सुन रहा है." Their comparison, but it was actually jealousy. Jealousy, envy at the quality of others. शायद उसके लिए भी वो उसको टपली मार रही होगी. And belladonna and tuberculinum did not work. And then delusion, friendless, I took. And like one doctor said, maybe she's making fun of the friends in school also. And that is why they don't want to involve her or they must be not talking to her. Aise hoga. So finally, like all of you said, I took these rubrics. Amusement, desire for. Delusion, friendless, is gourmand. Sickness में भी she wants to eat. मला खायचंय, pani puri, momos, burger. The way she said, I still remember, I want to eat that. That is gourmand. You must take this. Jesting, reading, aversion to read, and traveling desire for. I took and I got lecasis.
Not that Lacasis didn't come in my mind when I was giving her for the first time, but I got misled thinking that, Lacasis is in front of me also, she'll be that way. That is what I thought. So I had given her belladonna and tuberculinum, but this turned out to be Lacasis. And after Lacasis, now it is almost a year that she's not fallen sick. So people who have said Lacasis, congratulations, very good. My motto or logic for giving you this is simple case hai, lekin to bhi sometimes we get misled by these small things. We get confused with similar belladonna, tuberculinum, spongia, Lacasis, this lively kind of remedies. Now we may get confused. That's why I given you this particular case. And Lacasis we know, hard for inferior, soft for superior. See, some very good rubrics. Look at that girl, what she's doing in front of teacher. You have seen so many people in school doing like this. So what our repertory has given such beautiful rubric. Play desire to dirty tricks on others or their teachers, schoolboys. You can read it as schoolboys desire to play dirty tricks on others or their teachers. Such appropriate rubric, You will get so many Lacasis in schools, who are giving you this particular. Frivolous, we saw, ekdam chilled. Amusement, desire for. Playful, travel, wander, desire for. Basically, Lacasis doesn't want you to, stop there like belladonna, like tuberculinum. These remedies, they don't like you to stop their play, stop their amusement. They are, मेरे को जैसा करना है वैसे करने दो, then, but Lacasis has got this specially, that look at that girl, what she's doing. She's teasing. She's jesting, mazak karna, chidana, all that, So there are a few rubrics of Lacasis which I would say they are disorderly. What is disorderly? It is opposite of fastidious. Fastidious, arsenic will be always, order and particular. They're always disorderly. Maza aaya na bas ho gaya, chaotic. Orderly manner cannot perform anything. Kuch bhi barabar se nahi. Dhandali bolte na bahut baar hum log. Time fritters away. Elegance, want of mein hai. What is elegance? Elegance is an attribute child. You will see very prim and proper, elegant kind of. You will always, attribute is the one whom the parents are very happy. Carcinosin. They will always sit properly, be properly. But here, this is elegant want. Okay, ऐसे भी बैठेगी, कुछ भी करेगी, giggle करेगी, मतलब उन लोग का ऐसे, they don't want to put a good impression on you or something like that. They are their own self. Studying, I had told you, concentration, difficulty in reading, studying, aversion to study, because study is ek jagah baithna, and we all know Lacasis has got sitting aversion to sit. ये rubric में सिर्फ Lacasis and iodum है. So don't take it for all the hyperactive children, but you can correlate it like that they have aversion to sit. And one more is their bed aversion to, shuns bed. इसमें भी Lacasis है. बेड एवर्जन टू, एक जगह पे सोना नहीं है, बैठना नहीं है, घूमते रहना है. That is the kind of, they are intelligent. I told you, this girl is not dull. She is not like a baraita carb. But उसको interest ही नहीं है. So maybe when she gets interest, she will study. But 7th standard में she feels मस्ती करना है बस. We see so many children, parents say that बुद्धू नहीं है, होशियार है, लेकिन पढ़ाई नहीं करना है. She is one amongst them. Intelligent, inquisitive. You have Lacasis will ask many questions because they are loquacious. We know Lacasis as very loquacious children, will keep on talking. So ये घर में बहुत loquacious थी, बहुत बातें करती थी, मस्ती करती थी. But in front of me, she did not. So timidity, public appearing too. So Lacasis children, when they come to you, they can present a very timid picture also, especially first 2-3 times. Once they are very comfortable, they will be their own self. Mischievous, full of ideas. There are few other rubrics of Lacasis also. Look at this girl, sofa pe jump marna.
arsenic will never do it, natramure will never do it, or a carcinosin will never do. जोर से चिल्ला के गाना, you know, you see so many children, they're very creative. That's why they want to wear, you know, all good things, a hairband with a bunny or some colorful things. Foppish is all this, you know, very colorful and very decorative things. Precocious kids, they are intelligent and they are curious, I told you. So they are precocious also. मतलब precocious is उनको जल्दी समझ में आता है. They understand things which a 15-16-year-old should understand. A 10-year-old they will understand, you know. So they are well aware of so many things. बात करते समय भी they'll tell you so many things. अरे बाप रे, इसको तो बहुत ही कुछ आता है, you know. That kind of precocious kids. Hyperactive kids we all saw. Fight desire too, mastikhor, fight, you know, they can be bullies in school. They will be bullying the 5th standard children or 4th standard children. Like maybe this girl also does that. We don't know, you know. Jealousy from disappointed love. Lachesis and hyoscyamus are the most jealous remedies in our materia medica. Lachesis is one of them. We know snake, no? Once Dr. Hussain sir had also taken lachesis. So that time he had told us that camouflage and very jealous. And disappointed love may not just be a love affair. Disappointed love is 2-3 साल parents मुझे प्यार कर रहे हैं, and now the younger brother is come and now they are giving him importance. So that is also disappointed love. Disappointed love is not just between a girlfriend and a boyfriend, you know. So jealousy hai, so that is also there. Envy, qualities of others, that, you know, ye jealousy ka sub rubric hai. Timidity, I told you. One important rubric of lachesis is also insanity after overstudy in exams. See, they aversion to study hai, but they are intelligent. So sometimes, you know, parents force them and they're like continuously studying, maybe for NEET, maybe for JEE or UPSC exam. And then after overstudy, when you get side effects, you have this beautiful rubric, insanity after overstudy in exams. So this is also one important rubric of lachesis. Let me give you a few more rubrics of lachesis which you all should know. We told you about playful, we told you about play desire too. Vivacious. Vivacious is a very important. What is vivacious? Full of energy. Look at this girl, know how she is. Full of energy. थकेगी नहीं. Excessive energy children in. है ना? ये वाला है. So, desires, full of desires. Infinite. सब चाहिए. ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए. She's suspicious, delusion, spied being. Suspicious, no? That is the snake quality. Hard for inferior, soft of superior. This we know. It has only got lachesis, lycopodium, veratrum, and platina. Only 4 remedies. So it's very important rubric. We generally see na, मम्मी पे राज करेगी, पापा आएंगे तो चुप बैठेगी. But if you compare this between other remedies of this rubric, lachesis is caring towards that inferior also. You know what lachesis will do? मम्मा को परेशान करेगी, मम्मा पे राज करेगी, लेकिन अगर मम्मा sick है तो she will ask for her. So lachesis is a homely person, you know. She will ask mummy, what do you want? And मैंने परेशान किया क्या? She might say sorry, but she'll still do it. Okay. So lachesis is that way. Lamenting sickness, when a lachesis child is sick. देखो ना, मेरे पैर दबाओ ना, हाँ ना, मुझे क्या हो रहा है, you know, kind of lamenting. Lamenting is रोना रोना, you know, दुखड़ा रोना, complaining, lamenting. That is all lachesis. You know, they will not be quiet like a cocculus child is like quietly sleeping, yeah, a bryonia or a gelsemium. Lachesis will continuously say, देखो मेरा सर दुख रहा है, देखो मेरा throat दुख रहा है, you know, then you can use this. They're very impressionable children. What is impressionable? Saw a Batman movie and then want a Batman t-shirt. जंप करना है, मैं क्रिश के जैसे जंप करूंगा. यू सी सो मेनी चिल्ड्रन. आई सी सम चिल्ड्रन आजकल वो तौबा वो डांस करेंगे आके क्लिनिक में ऑल्सो. दे आर सो इम्प्रेस्ड बाय द एक्टर, दे आर सो इम्प्रेस्ड बाय द, दे वांट टू डू इट, यू नो, दे वांट टू डांस एंड ऑल दैट.
So coquettish too much children, nakhrelu, nakhrebaz bacche, So coquettish too much children in hair. And like I said, the main rubric of Lacasse is also delusion charmed and cannot break the spell. Lacasse will be charmed by you, the doctor, or by the teacher, or by a film star, or by some model and want to look like that. Delusion charmed is like how a snake gets charmed by the sapera's music. So that is why this rubric, this remedy also isn't religious people get charmed, charmed by the thought of religion, charmed by the gurus, charmed by stories of Krishna, and then continuously in that bhakti. That is also delusion charmed, you can take that. So some children are like that, they are religious. So Lacasse can also be religious children. Boaster, rich wishes to be considered. Boasting है ना, बड़ी बड़ी बातें करना, like your sulfur child, I had a sulfur child who said मेरे पास तो 5 TV है, मेरे पास तो 10 AC है, every time he would count 10 AC है, मेरे पापा के पास 3 cars है, so that is what a sulfur. He's also a braggart, he's a boaster. So Lacasse is also boaster, he wishes to be considered very rich. Delusion influence is under a powerful. This is like the delusion charmed, superhuman control is under, they always feel like that. They can be revengeful, but in बच्चे revengeful कैसे लेना है, that is little difficult, because बच्चों में revenge नहीं, but मैंने मारा उसने मारा, you don't finish that कड़ी, that can be taken as revengeful or malicious. So Lacasse I think is clear most of the rubrics. Anybody wants to add anything to the Lacasse? Then we'll do DD with belladonna and tuberculinum also. Anybody? Lacasse ka kuch, and are you all convinced with the Lacasse? Because so many people gave other remedies also. I was surprised. Thuja, 2-3 लोगों ने thuja, carcinosin. See, don't get misled only by rubrics. See where the energy of the child is. What is the child doing? What is the child complaining? There may be very the other rubrics, peripheral rubrics, but you should get the gist of that child in that remedy. You will not get the whole remedy in the patient, but the patient should fall into the remedy. Always remember. So your observation is important. This is what Hahnemann sir has said. Then the patient's complaint and how is it concerning him or her, adaptation, reaction, and then what the mother or the attendant says. You see in the organon, no? Sir has never said only this. He has said you ask the attendant, then you correlate, you observe, and then make a totality of the picture. So always this totality will help you when sometimes you don't get the right remedy in the first episode. You may help them in the acute. My belladonna, my tuberculinum helped her in the acute, but she again came back after a month. So that means it is not holding. It is not holding. Your correct remedy or similimum should hold that patient, they should not fall sick as often. अगर हर acute में हम देते रहेंगे, so it is not layer. It is your remedy is wrong. It is partially similimum. So you should get a similimum remedy, and then you will see that the patient will intensity will reduce, frequency will reduce, and this is the right remedy. And something will change in the child. Something, either the expression will change or the mother will say there is definitely a change, So that has to happen for it to be a similimum. Anybody wants to add anything to Lacasse? I gave you so many rubrics. I must have given around 35 to 40 rubrics of Lacasse. हेलो मैम. Hello. मैं Yes, ma'am. ऐड करना चाहती हूँ कि थोड़े दिन पहले ना मैं एक केस कर रही थी बच्चों का, तो उसमें देखा कि ईगोटिज्म चिल्ड्रन इन, तो सिंथेसिस में सिर्फ एक सिंगल लैकेसिस है, और उसी पॉइंट पे बाकी भी सब देखे थे, लेकिन थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था. तो ये कंफर्म था, वो बहुत ईगोइस्टिक लग रही थी इतनी कम एज में भी.
और वो उसको दिया, वो कोई भी मेडिसिन लेने के लिए तैयार ही नहीं थी, तो मैंने वाटर डोज में उसको देखिए पानी में डिजोल्व कर करके देने के लिए बोला था 2-2 घंटे में या दिन में 3-4 बार, तो उससे वो निकल गई केस। तो क्या Yes. सल्फर के बच्चों में ईगोटिज्म नहीं रहता है? सिर्फ सिंगल ही दिया है लैकेसिस। Yeah, you have to see who has added it, na? बिकॉज ईगो तो ये सल्फर में भी है, ईगो लाइकोपोडियम में भी है, तो देर इज अ ब्रॉडर रूब्रिक ना, ईगोटिज्म तो रूब्रिक है, उसमें ये सारे रेमेडीज आएंगे। मे बी दे हैव गिवन इट, समबडी हैज एडेड, सो इट इज मोर, बोलते हैं ना, वो पक्का हो गया 3 marks। प्रिकॉशियस चाइल्ड है। ईगो इज अ नॉर्मली वी एसोसिएट ईगो विथ एल्डरली पीपल ना। बच्चे तो आइडियली इनोसेंट होने चाहिए, बच्चे तो आइडियली दे हैव टू बी वेरी सॉफ्ट, but if you see egotism children in, matlab they are actually precocious, so you can correlate, and some rubrics are not prescribing rubrics, these are to understand, that is why you must, now you will remember for lifetime, egotism children in Lacasse hai, so ego is there, you will not prescribe just Lacasse for this rubric, but it's a combination of rubrics, right? थैंक यू मैम। Yeah, yes. Anybody else wants to add anything for Lacasse's child, or you have any experience with the Lacasse's child whom you mistook for belladonna or spongia or tuberculinum? मैम कॉलेज टाइम से हम लेकेसिस के लिए एक चीज बहुत पढ़ते थे कि वो नेक पे कोई चीज नहीं पहन पाता या टाइट क्लोथ्स नहीं पहन पाता। Yes. Physicals, physical generals, when I was practicing the classical, even today I take it for confirmation, I ask them whether you wear tight neck tie or you wear a dupatta like that, or you see. So that adds to your confirmation. It's not that wo nahi hoga to aap doge nahi. Lekin, yes, you will see maximum people of Lacasses, they don't like tight things. They will not wear that polo neck thing. They will not wear a tight dupatta. They will open their front button. So that also, we also said coquettish na. So coquettish bhi ekdam stylish with open button and all. They don't like that typical band office look. Ma'am, this signifies to the sphere of action. Maximum Yes. patients coming to us, their throat is sensitive in the Lacasses. Yes. Abhishek And- sir, you were the first one to crack immediately Lacasses dar karke. It was an easy case for you anyways. But Arre nahi, ma'am. Lacasses, yes. Sphere of action, throat, Lacasses, Yes. lycopodium, hamesha throat infection pehle hoga, tonsils infection. We in college, in fact, we did na left side Lacasses, right side lyco, Yes. and left to right to left is lacanine. I still remember first year में हम लोग ऐसे by heart करते थे, है ना? And So ma'am, sometimes, one more point to signify that doctor was asking about the throat symptoms, na, that the doctrine of signature comes to that as well. Whenever the snake is to be caught, it is caught from the neck only. yes. So all the snake remedies have sensitivity to the throat, and Lacasses is the most common. Correct. We practice from the mind method, but classically also, sensation method also. There are so many, no? So if you correlate, then Lacasses has got a very These are the confirmatory points, ma'am. We can confirm Yes. we become more surer of our remedy to hit. More sure. Yes. When it is an acute case, we don't have time, like, abhi ka abhi dekha hai, like now dengue case hai ya aur koi case hai, you need to, so that time you should have all these confirmations also. Yes sir. हमें मैम गवर्नमेंट डिस्पेंसरी में ऐसे ही मूव करना पड़ता है. दैट्स व्हाई आई एम लिटिल हेजिटेंट टू प्रेजेंट बिकॉज दीज आर स्नैपशॉट प्रिस्क्रिप्शंस बेसिकली. yes वहाँ पे एक मिनट में 2 मिनट में यू हैव टू प्रिस्क्राइब ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में. जी. तभी तो Yeah, लंबे yeah. केसेस But नहीं आ देखो- पाते ना, जैसे आप देते हो.
हाँ, हम लोग तो क्लिनिक में बैठे हुए होते हैं ना, तो फिर वी कैन टेक हाफ एन आवर, वी कैन टेक 20 मिनट्स आराम से. That's a challenge, government hospital. But उधर भी if you make a particular protocol, like ढिंचैक सब डाल के आया हुआ है, या that kind of impressionable, charmed, ऐसा कुछ भी हुआ होगा, तो you can think about lachesis, ना? Exactly right. Yeah. Any other experience with lachesis anybody has got, especially bachus? Anybody wants to share? Yes. Good evening, ma'am. Good evening. हेलो. हाँ मैम, मेरा एक एक्सपीरियंस है, मैं उसको शेयर कर दूँ आपके साथ. एक्चुअली मेरा बच्चू है, वो 10 ईयर ओल्ड है, तो उसको मैम कफ कोल्ड कोराइजा है, तो उसको भी मैम वो मतलब बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ में एब्जॉर्ब हो जाता है, एक जगह बैठ नहीं पाता. और अम्यूजमेंट डिज़ायर, मैंने वो काफ़ी रुब्रिक्स लेके उसको लेकेसिस तो आ रही थी, बट कंफर्मेशन के लिए वो हमेशा अपना नेक का ऊपर का शर्ट बंद करके ही रखता है, तो मैं उसको लेकेसिस नहीं दे रही थी, और जेलिसी वगैरह भी है उसमें. तो फिर मैंने लास्ट टाइम उसको लेकेसिस दिया, तो लेकेसिस से मतलब बहुत अच्छा निकला मैम, आराम मिला. Yes. That's why I said ना, never मतलब सारे लेकेसिस के सिम्टम्स वो बच्चों में होने ही चाहिए ऐसे मत सोचो. बच्चों के सिम्टम्स लेकेसिस में आने चाहिए. Here when you said that वो नेक बंद करता है, you wanted लेकेसिस symptom in the बच्चों ना, which will not happen, correct, while prescription. Yes, Dr. ma'am. Sonal, that patient still comes to you? एक्चुअली सर वो मेरा बहुत बेटा है. time. ओके. Yes. मैम आप उसका देखिए कि जो उसका कॉलर होगा वो थोड़ा सा लूज होगा. अगर आप उसको टाइट कॉलर पहनाओगे तो माइट बी यू विल गेट दैट सिम्टम ऑफ लेकेसिस. अगर उसका कॉलर लूज है तो वो अपर बटन बंद कर लेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी. सर एक्चुअली ऐसा ही था, वो एक्चुअली ऊपर का शर्ट टाइट भी रहता था, तो मैं इसके लिए उसको लेकेसिस नहीं दे रही थी कि अरे सारे सिम्टम्स मैच हो रहे हैं, मेरे रुब्रिक्स में भी लेकेसिस आ रही है, तो बस मैं इस वजह से उसको दे नहीं रही थी. फिर लेकिन उसको इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा था, मैं कि चलो देख के देखती हूँ, तो फिर मैंने दिया सर. वो सर टाइट भी रहता है, तो यस सर. Ma'am, always take all these as the confirmatory, not ruling out symptoms. Don't rule out any remedy ruling on nahi, this. and Huh. yes, it is not to prescribe, but it is to understand and maybe correlate. जब 2-3 remedies में DD करना होता है, तो you can decide. I'll give you one behavior, mainly this behavior thing in a lecasis child. जैसे I have one more lecasis boy, he's in 8th standard. So they had this head girl, head boy का election ना. तो अभी प्रिंसिपल ने उसी दिन सुबह असेंबली में सबको बोला था कि इट इज अ इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड यू बॉयज आर स्पीकिंग इन हिंदी. दैट इज रॉन्ग. So anybody speaking in Hindi, we will fine them 100 rupees. So from tomorrow, all have to speak in English. That same day morning, the principal had announced in the assembly. This boy, what he did, after some time, they had to canvass for their elections, head boy ke liye. So he went into all the classes and he said, ये डोमिनेशन नहीं चलेगा, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, किस तरह से बोलते हैं हिंदी में बात नहीं करना. इफ आई बिकम अ हेड बॉय, आई विल मेक हिंदी कंपल्सरी इन आवर स्कूल टू स्पीक. दिस काइंड ऑफ अगेंस्ट द प्रिंसिपल also he used. And that day my friend and her husband were called in the school to say, look at the way your boy is behaving. So इतना वो लगता है ना, मतलब look at this kind of behavior of a lecasis boy also. So they can be this kind also. समझा ना what I'm trying to say? Lecasis can be like that. ये भी तो egotism ही है ना, egotism that I will do this, I will do that. This kind of also a lecasis can behave. Now with lecasis, he has really changed his behavior a lot. I had given lecasis for his throat infection only, and the behavior, always boasting, and even in front of teachers he'll say like, I know better, I'm a first ranker, maths I can solve faster than everybody. That kind of boasting in front of the class.
So you have children like that. You have. Okay, we'll DD with belladonna and tuberculosis or tuberculinum. मैम Belladonna, see, because yeah. Hello. Yes. Any लैक्टिस ना हमेशा मैं करके बात करता है, वो कभी भी हम नहीं बोलेगा, कभी भी। अच्छा, ओके, मतलब उसमें इतनी इगोटिज्म होती है ना, वो इस हिसाब से मैं बोल रही थी। yes. That's why that ma'am had said na egotism children, and so I remembered this particular case. Kitna ego principal ke bare mein he was like, normally we feel na hard for inferiors, but isme to isne principal ko bhi challenge kar diya tha ki how is the principal saying Hindi is not allowed in Maharashtra, in India. Hindi is our rashtra bhasha, such a 8th standard boy. So you can see this kind of children like asses. Ma'am, I just wanted to add one thing over here. Yes, Ranjita ma'am. Yes. मैम यू जस्ट सेड ना कि वो जैसे हिंदी अब हमारी राष्ट्रीय भाषा है, ऐसे कैसे प्रिंसिपल ने कर दिया। मैम वी कैन कंसीडर दिस एज प्रोटेस्टिंग ना, प्रोटेस्टिंग में मैम कैसेस है, ये प्रोटेस्ट कर रहा है ना मैम। है क्या? अच्छा, हाँ मैम, आई जस्ट ओके, आई डिडंट नो दिस। हाँ मैम, जस्ट अभी देखा तो मैम ये प्रोटेस्ट हुआ ना, वो बच्चा प्रोटेस्ट कर रहा है जैसे। Yes, correct. So see, these are all, confirmatory. You may not prescribe it, but now you know the lecasis child can behave like this, protesting. Good. Thank you, Ranjita ma'am. एक स्नैपशॉट आपको डीडी बताता हूँ बेलेडोना और लेकेसिस का, हाउ आई डिफरेंशिएट बिटवीन, बिकॉज दीज आर टू कॉमन रेमेडीज, वी ऑलमोस्ट गेट कंफ्यूज्ड इन दिस। मैम मैं ये पूछता हूँ कि अगर माँ या दादी बीमार हो जाती है तो बच्चे का रिएक्शन क्या होता है? तो लेकेसिस इज ऑलवेज केयरिंग फॉर देम। वो कितना भी अम्यूजमेंट में रहे, कितना भी फ्रिवलस रहे, बट समवन whom he loves, if they fall sick, then the लेकेसिस चाइल्ड will take care of them. बेलेडोना अपना मजा मस्ती उसका चलता रहेगा, he is not bothered, वो अपनी मस्ती में रहेगा। लेकेसिस is cares full of others about and relatives about ना। So this is a snapshot DD where I differentiate belladonna and lecasis. Correct. We all can do that. You have to ask जब कोई बीमार होता है। Yes sir. आग लगे बस्ती में, हम रहे मस्ती में। आग लगे बस्ती में, हम रहे मस्ती में। वे मस्ती के लिए क्यों आग लगानी है महादिक सर? So belladonna is also this ना, आग लगे बस्ती में, कुछ भी हो जाए हम हमारी मस्ती में होंगे करके। frivolous we all know, playful, अभी तक तो frivolous playful सारे लोग पकड़ चुके हैं। laughing speaking when, वो जो giggling था ना, people like that, I also got confused with laughing speaking when, but मुझे लगता है that was a very, again, that mocking kind of या jesting kind of behavior of hers, what she was doing when I was asking her, giggling, what she's asking kind of, mocking. Carried desire to be carried fast in belladonna, fast ठीक होना है। अभी इधर भी fast ठीक होना था, लेकिन इधर fast ठीक होना था because खाना था, momos खाना था, burger खाना था, cold drinks पीना था. So it is more of gourmand in lecasis. Belladonna has got light desire for. Credulous, they will still listen. Superstitious. So all these are belladonna, like sir ने बोला ना, cares में DD कर सकते हैं. Any other DD of lecasis and belladonna? Any of the practitioners? Quick. Belladonna is calculation incapability of. Yes. So ये इसमें नहीं है क्या? इसमें language weak है. Lecasis has got dullness in studies, but maths I don't know. Anything else where you can differentiate both in the clinic? This one timidity I told you, not timidity. Ma'am, lecasis carefulness. Hello. Careful, yes. एक बार बीमार हो गया तो नेक्स्ट टाइम ही विल नो आइसक्रीम खाने से गला खराब होता है, तो नेक्स्ट टाइम ये बच्चा बोलेगा आई डोंट वांट आइसक्रीम, इट इज गिविंग मी थ्रोट पेन. तो यस, करेक्ट दीपा मैम, कॉशियस भी है, केयरफुल भी है लेकेसिस. बेलेडोना नो, बेलेडोना खा लेगा, जब उसको चाहिए दिखेगी तो खा लेगा, वो साथ में खा लेगा.
उसको लाइट रहना है, अभी ठीक कर दो, कैरिड डिजायर्स फास्ट और फिर वापस से ले लेगा. Whereas lecasis will not. Lecasis is careful and very cautious. Yes, correct. Very good. Yes. सबसे इम्पोर्टेंट तो ना लाइट डिजायर होता है बेलाडोना में. लाइट डिजायर में लेकेसिस नहीं है. मतलब मेरे पास एक केस था इसी बच्चे का, 7वीं की बच्ची है वो, और उसको बार बार अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता था, इसलिए उसके पापा ने मेरे पास पाया. अभी उसको क्या था, वो बहुत फ्रिवोलस है, मतलब फ्रिवोलस उसमें पक्का था, वो मेडिसिन ही नहीं लेती थी. तो मेरा बेलाडोना चल रहा था दिमाग में, बेलाडोना है क्या, और वो क्या बड़बड़ी थी, जल्दी घुल मिल जाती थी, उसको ऐसा लाइट माहौल उसको अच्छा लगता था, ऐसा मुझे लगता था. लेकिन उसने बताया ना कि ज्यादा क्या है, तो बच्चा छोटा है, उसका एक छोटा भाई है, और जब भी पापा मम्मी उसको अच्छा बोलते हैं तो इसको जमता नहीं, इसको तकलीफ होती है. दूसरा और मैंने कंफर्म किया कि वो बोलती थी मैं जब बीमार होती हूँ ना, तो मैंने बोला कि क्या ज्यादा तकलीफ देता है, तो बोले मैं सोती रहती हूँ और मेरे फ्रेंड्स आते मेरे तरफ और मैं बीमार देखकर वो दूसरे फ्रेंड्स की तरफ जाते हैं. मैंने बोला कि क्या फरक पड़ता है फिर, तो बोली कि नहीं मुझे नहीं जमता, मुझे बहुत गुस्सा आता है, मला लय राग येतो त्यांचा असं म्हणाले. तो फिर उसको मैंने लैकेसिस दे दिया. तो अभी आते जाते क्या करते रहते हो, मेरे रास्ते पे घर है उसका, तो मुझे देखकर फिर हाय डॉक्टर ऐसे करेगी. तो ये लैकेसिस का रहता है. लैकेसिस में लाइट डिजायर नहीं है, लेकिन इसका जेलसी फैक्टर बहुत ज्यादा रहता है, बूस्टिंग फैक्टर बहुत ज्यादा रहता है, बूस्टर बहुत ज्यादा रहता है. लाइट बेलाडोना का सब कुछ लाइट है, मतलब एकदम हल्का फुल्का रहेगा उसका, किसी बात की चिंता नहीं, टेंशन नहीं. इसको बहुत टेंशन है लैकेसिस को, मतलब लैकेसिस दूसरे को कोई अच्छा बोले जमता नहीं. मेरा छोटा बच्चा है तो वो क्या करता है समझे, उसके भाई की पढ़ाई करे या स्कूल में कौन होशियार है तो मैं होशियार हूँ, क्रिकेट कौन अच्छा खेलता है तो ये अच्छा खेलता है, मतलब हर दिन वो हैट्रिक करके आता है, ऐसा उसका बोलना रहता है. मतलब विराट कोहली जैसा खेलता है वैसा ये खेलेगा. अभी घर में सबसे सुंदर कौन है, मैं हूँ, मतलब सब मैं. बेलाडोना की ये चीजें बिल्कुल नहीं, मतलब कुछ लेना देना नहीं, अपनी मस्ती में वो चलते रहता है. जैसा अभी मार्डिक सर ने बोला कि जल जाए बस्ती हम रहे मस्ती में, ऐसा उसका रहता है. तो लाइट डिजायर से भी हम बेलाडोना को डिफरेंशिएट कर सकते हैं. yes sir, correct. See, such a good differentiation ना, लाइट रहना है, बट इसमें इसको बहुत इम्पोर्टेंट है. yes sir. So belladonna clear for all. Shall we move forward? Yes ma'am. Yes, let's do it tuberculosis. हाँ, मैम एक बात, yes नितिन मैम. जैसे हम बोलते हैं कि ये नहीं, थ्रोट पेन है तो ठंडा नहीं खाना है, या हम कुछ पथ्य पानी जो बोलते हैं पेशेंट को, तो लैकेसिस फॉलो करेगा और बेलाडोना नहीं फॉलो करता. ही इज अनरिलायबल इन प्रोमिसेस, ये भी है ना उसमें. हाँ, yes. वो बोलेगा नहीं, फॉलो करेगा. Whereas lecasis is careful also, cautious also. Next time से वो नहीं, मुझे तकलीफ होती है, I will not, because उसको वो डर है कि वापस हो जाएगा, वापस उसका अम्यूजमेंट स्टॉप हो जाएगा, वापस उसको खिचड़ी खाना पड़ेगा, so उससे अच्छा नहीं है, एंड मैम वन मोर पॉइंट, एक बार सचिन सर की केस में सर ने बताया था कि कभी कभी बेलाडोना से इंफॉर्मेशन निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, वो बताते ही नहीं कुछ, और लैकेसिस तो फटाफट सब बोलते हैं खुद ही, इतनी एनर्जी होती है. वो खुद ही लोग कैशियस होते हैं तो वो खुद ही सब बता देते हैं. और बेलाडोना से इंफॉर्मेशन निकालना मुश्किल है, तो पुलिंग टीथ लिया था शायद सर ने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. Yes. See, there are so many points, where we can differentiate, but they may look very similar, belladonna and lecasis. So one has to consider, अगर belladonna नहीं काम कर रहा है तो lecasis, और lecasis नहीं काम किया, then also you can think of belladonna if the points match always. Okay. I had also thought of tuberculinum, because tuberculinum is one remedy where amusement desire for is too much and they want change. That is the main, traveling, change, maja masti, libertinism. So I thought, and recurrent infections, my this thing of classical practice na, recurrent respiratory infection, that led me to think that this case could be tuberculinum when belladonna did not act. बट ट्यूबरकुलिनम में ना हाइपर एक्टिव और वॉन्डरिंग डिजायर, मिस्चीवियस चाइल्ड है, बट डिस्ट्रक्टिवनेस इज मोर इम्पोर्टेंट.
remember, look what this child is doing. उसने सब वो किया और मैंने तोड़ दिया धड़ाक करके, you know, destroy करने में उसको मजा आ जाता है. So same kind of child है, precocious है, hyperactivity है, wander desire to है, लेकिन इसमें destruction है, striking है, threatening है, break things desire to है. Tuberculinum में, tuberculinum is a very angry remedy. Anger throws things. This girl did not show that kind of anger. That's why tuberculinum did not help her at all. It is contrary to parents. Insolent children, बोलते हैं ना, abusive, insulting the parents. These kind of children, malicious, striking anger in, shameless children, obstinate, headstrong children in. ये भी tuberculinum का है. They want freedom. Or parents are the only one who will stop them, no, from doing anything. That is why they'll exactly do the opposite. So contrary parents with is also in tuberculinum. Insanity, madness, travel with desire to. Look at the desire of traveling. So much of madness. They want to just wander from here to there. Anger from contradiction. Behavior problems children in. Striking children reprimanded when. You see 3-year-old, 4-year-old child also, when you shout at them, they will give you one dhabaka. So, you know, energy excess children in. Amusement दोनों में common है, precocity common है, change desire common है, but only difference is tuberculinum child goes for more destructiveness. So is tuberculinum ruled out well? Nobody had given tuberculinum ka DD in today's this thing analysis, but I had given. That's why I was very frank to tell you I did this mistake by giving tuberculinum. Maybe it could also act as a block remover, you know, blockbuster, which I do sometimes when I'm not getting a result. I give these kind of anti-miasmatic remedies, vaselinum, tuberculinum also, which normally in mind method we don't do. But I don't know whether that removed the block or anything, or lecasis was the similimum only. So I hope today's case gave us an insight into belladonna, tuberculinum, and lecasis, and so many rubrics of lecasis. When you know the rubrics, you can apply it. So keep reading these rubrics. Whenever you read belladonna, read all the rubrics of belladonna. When you read lecasis, read all the lecasis rubrics. We have done children remedies also. So all chamomilla, cinna. Keep reading the rubrics, you know, every day. एक 5 minute में फटाफट सारे rubrics, and then, you know, very short these differentiating points also you can do, and then you will get your remedy. Sometimes first time you may not get it, but asthmatic बच्चे है या recurrent respiratory infection है, cough है, they will come to you again, because in acute you have definitely helped them better than an antibiotic or a whatever syrups they are using. So they will definitely come to you again also. So you can again repertorize and then give them if you feel your first remedy is wrong. So many results we get in the second or third or fourth time also. But yes, in children, I want to tell you, always, you know, children, always be there for the parents, you know, because parents are very anxious and parents will keep calling you. Fever 103, abhi dengue ka case I had, few bachus, 103 ho gaya, 104 ho gaya, 102 ho gaya. So don't cut the phone, don't be rude. Even if they are anxious, be there for them. Tell them, yes, it will go, don't worry. Reassure them. Ask them to make a chart of the temperature. Ask them, you know, comparison. पहले इतने बार खांसता था, अब कितने बार खांस रहा है. So, you know, sometimes they don't understand. They'll say same hai. So always make a chart about the energy level, about the appetite, about the sleep, about the fever, about the cough. And then every time you ask all these parameters also in a child. Behavior. Ask about the behavior. Sometimes, you know, the chief complaint may not go, but the behavior may change. And then the parent may say, yeah, because they have never. It is the cough which is important. But for us, behavior is also important. So you have to explain to the parent. So any empathy, you should have empathy for the patient and the parents.
give them your support. Sometimes your remedy may not work, but your empathy, your understanding. So many times I have missed the remedy, but I have suggested that sorry, I am not able to give you, please go to a allopathic doctor, or I will send to some senior homeopath. They are happy with that, and then they come back to you. They come back to you because they know that you have given them the right guidance. So a doctor's job is not just prescribing homeopathy, but it is also to give support and security to the parent that your child will be okay, don't worry. So I think today's lecture we can end over here. Is there anything that anybody wants to say? हेलो मैम. Yeah. मैम Yes, Diga. लैकिसिस ना बिनोवेलेंस में भी है और फुलिश बिहेवियर में भी है. तो एक बार क्या मैं एक पेशेंट को लैकिसिस दी थी, उसके लैकिसिस मतलब डिलूजन चार्म्ड एंड डिलूजन इंजर्ड, बीइंग इंजर्ड सराउंडिंग बाय, मैंने उसको दी. तो उसने क्या किया, जैसे ऑफिस में ना किसी और को भी कफ था, तो उसने जाके कहते उसको बहुत ज्यादा हो रहा था, मैंने अपनी मेडिसिन उसको दे दी, है ना. तो मैंने कहा ठीक है, इसमें दोनों चीजें लगी मुझे कि कहते नहीं इसको बहुत ज्यादा खांसी हो रही थी, तो मैं उसका रूब्रिक केयर्स फुल ऑफ है ना, वो उसको भी चिंता हो गई, उसको भी खांसी के लिए दे देते करके. यस यस, यू गेट टू लिसन दिस. तो तुमको बोलना चाहिए नहीं उनका रेमेडी अलग, आपका रेमेडी अलग, नहीं तो सब एक ही रेमेडी खाएंगे. एक ही घर में भी बहुत बार ऐसे होता है ना, मैंने इसकी दवाई उसको दे दी, बोलेंगे पेरेंट्स, उसको भी खांसी हो रही थी, उसको भी दे दी मैंने दवाई वही वाली. सबको तो ऐसे फुलिश बिहेवियर में भी लैकिसिस पड़ी है. यस यस यस, बाय चांस वो पेशेंट भी ठीक हो गया. यस मैम ये तो कई बार होता है. पेशेंट को मैंने एक पेशेंट उसको कार्ड से दिया, उसकी बड़ी बेटी को फीवर आ रहा था, तो उसने उसको भी खिला दिया, बोला दवा से उसका भी ठीक हो गया. मैं कह रहे ऐसा कैसे? नहीं, वो भी खांसी हो सकती है ना. एक ही फैमिली में बहुत बार बहुत सारे लोग एक ही रेमेडी भी होते हैं बिकॉज ऑफ दैट सिमिलर जेनेटिक बैकग्राउंड, हो भी सकता है. थैंक यू सो मच, सो वंडरफुल टीचिंग, लर्निंग हमेशा की तरह. तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी अब तक अनजान थे स्मिता मैम के टीचिंग से, उनके पढ़ाने के तरीके से, जिस तरह आपको उनका अंदाज अभी समझ में आया ही होगा, किस तरह वो डीडी करती हैं, किस तरह पढ़ाती हैं. तो HSH आप लोगों के लिए, सभी के लिए कोर्सेज करवाता है. बेसिक कोर्सेज है, एडवांस कोर्सेज हैं, काफ़ी दिनों से कोर्सेज चल रहे हैं, ऑनगोइंग अभी भी है, एडवांस कोर्सेज चल रहे हैं. और इसी अंदाज से वो पढ़ाती हैं, जिस तरह स्मिता मैम पढ़ाती हैं. और भी यहाँ पर मेंटर्स हैं, वो भी पढ़ाते हैं. डेली का पढ़ाई होती है, हफ्ते में एक दिन रिवीजन भी होता है. तो अच्छा खासा चल रहा है ये कोर्स. आज तक जो नए जुड़े हैं उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ, और काफ़ी लोग तो जानते ही हैं कि HSH में एक्टिविटीज़ क्या हो रही है, लेकिन जो आज पहली बार देख रहे हैं, पहली बार सुन रहे हैं, या यूट्यूब के ज़रिए कभी सुनेंगे, तो उनके लिए मैं बात कहना चाह रहा हूँ कि आप रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिलेगी. आप इंटरेस्टेड हो तो किसी भी एडमिन से, मेंटर से आप कनेक्ट कर सकते हैं, अशोक अवधिया सर से कनेक्ट कर सकते हैं. आप वहाँ का स्ट्रक्चर पूछ सकते हैं कि कोर्स कितने दिनों का होता है, कब होता है, टाइम क्या होता है, फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग्स का क्या हिसाब होता है. सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी. तो आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा. और वंस अगेन थैंक यू मैम. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you all for listening. Hello, doctors. For those who are new to the mind method or are into GP practice but want to start homeopathic practice, HSH is bringing you a basic course of applied mind method. The basic course starts in January, where we will teach you rubric selection, common version of patients, daily used rubrics and remedies, entry point of those remedies, confirmatory questions of remedies. You will get recording of these sessions for 3 months. This course will enable you to start your practice independently. You can enroll for our program. This course will connect you to a group of mentors who are always ready to help you anytime you are stuck in your case. For more details, contact Dr. Ashok Avadhia. Phone number 9893805528. Thank you.